गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लिक एग्जाम। आपण माने थंबनेल रो देखि परुथिबे। आज आम ये वीडियो रे रिवीजन करबा ए मंथ रे जहाँ भी फेब्रुआरी मंथ रे टोटली मंथली रिवीजन करा जिवो। पाखापाखि 400 प्लस क्वेश्चन रहिबो। रैपिड रिवीजन जहाँ भी आम पढ़ीचे सब जाक आम रिवीजन करबा। तबे चलंतु स्टार्ट करबा हमर रिवीजन सीरीज फेब्रुआरी मंथ रो। When is World Leprosy Day celebrated? Our answer is 31st January. Next question. Recently, India and which country have launched initiative for sustainable development and global environment protection? Our answer is France. Next question. Where will India's first dog park be set up? First dog park amar set up होइछि Chandigarh रे. Answer is Chandigarh. Next question. Which state government has transferred rupees 400 crore in the account of 20 lakh farmers? Our answer is मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट 400 crore 20 lakh फार्मर का अकाउंट को प्रोवाइड करछि। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली पास्ट अवे इंद्रजीत देव वाज ए फेमस। आर आंसर is एक्टर। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? हमरो आर आंसर is जय साहा। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has announced to import more than 8 lakh COVID-19 vaccines from India? Our answer is Morocco. तबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। Where has a cell been set up to address the issue faced by migrant laborers? Migrant labor मानको पई हमरो सेटअप करा हैछि। तो आर आंसर है गोवा। गोटे सेल सेटअप करा हैछि। Which country have received GI tag for its basmati rice? Basmati rice पे GI tag मिली बर्तमान पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently 18 years Monica Tahil become the first female break dancer of which country? Our answer है Afghanistan. Next question. Recently US President Joe Biden has banned the sale of F-35 fighter jets to which country? Our answer is United Arab Emirates. The next question. According to the recent released report, which city has become the most favorite city of tourists in the world? Our answer is Bali. तबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the MD CEO of SBI card? SBI card रो MD CEO वर्तमान हेचंती रामा मोहन राव आमारा। तबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently India has signed an agreement with whom for global energy security? Our answer है IEA. तबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently Biden appointed Rob Malley as the US ambassador to which country? Our answer है ईरान। ईरान देखि दवा। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन। When is Indian Coast Guard Day celebrated? Our answer है 1st February. Indian Coast Guard Day 1st February. तबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has started sports leprosy awareness campaign? Our answer है कर्नाटक। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has inaugurated the 8th edition of the Indian International Silk Fair? Our answer है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently IS officer Rajiv Ranjan has been appointed as the new chief secretary of which state? Our answer है Tamil Nadu. तबे नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently passed away Hilton Valentina was a famous guitarist. Our answer है guitarist. Who has launched the anti-doping reference वर्तमान हमरो किरण रिजिजू खेल मंत्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर अच्छी। Recently with which country has India started discussion of F-15ES fighter jet? Our answer है US. तबे नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has inaugurated a national tribal festival at Delhi Hat? Our answer है M वेंकैया नायडू हमरो वाइस प्रेसिडेंट। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI has cancelled the license of Shivam Cooperative Bank located in which state? शिवम कोऑपरेटिव बैंक कोठी अछि? आंसर है महाराष्ट्र। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड ए ईयर ऑफ इमरजेंसी रिसेंटली? वर्तमान इमरजेंसी लागू होइछि कोठी? आर आंसर है म्यांमार।
तेबे नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट पेपरलेस बजेट आफ्टर इंडिपेंडेंस आर आंसर हे जिवो हमरो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारामन। तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस फ्रॉम 49% टू हाउ मच परसेंट आर आंसर हे जिवो 74%। तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकम द न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत योजना आयुष्मान भारत योजना बर्तमान न्यू सीईओ अछंती आर.एस. शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज लॉन्च द नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया आर आंसर हे जिवो हमरो रामनाथ कोविंद आर आंसर हे जिवो हमरो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द फर्स्ट मेट्रो सर्विस टू बी सैनिटाइज्ड विथ यूवी रेज आर आंसर हे जिवो लखनऊ मेट्रो। तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड वेटलैंड डे हमर सेलिब्रेशन हुए 2 फेब्रुआरी रे। तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द हर घर पानी हर घर सफाई मिशन आर आंसर हे जिवो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट। तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय ऑक्सफोर्ड एज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 आर आंसर हे जिवो आत्मनिर्भरता। तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री हैज ओन द टाइटल ऑफ हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन इजिप्ट वर्तमान हैंडबॉल चैंपियनशिप जीतीची डेनमार्क। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली पास्ड अवे सिसिली टाइसन वाज ए फेमस एक्ट्रेस। तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑटोबायोग्राफी बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट हमर ऑटोबायोग्राफी होची हमीद अंसारी। तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री हैज ओन द मोस्ट मेडल्स इन द फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप आर आंसर हे जिवो इंडिया मन रखिबा हम देश भारत। हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द फेसबुक एज इट्स चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हेनरी मोनिज होचंती फेसबुक रो कंप्लायंस ऑफिसर। हु हैज रिटन ए बुक कॉल्ड द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट हमर लिखिचंती दलाई लामा। तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा रिसेंटली एनपी ट्रंग हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री आर आंसर हे जिवो वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज रिलीज नेशनल एक्शन प्लान फॉर व्हिच स्पीशीज आर आंसर हो मेराइन टर्टाइल। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली इंडिया's फर्स्ट जेंडर पार्क विल बी एस्टाब्लिश्ड इन व्हिच सिटी ऑफ केरल आर आंसर हे जिवो कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ महिंद्रा फाइनेंस आर आंसर हे जिवो अंशी साहा। हु हैज रिसेंटली ओन द शायद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी आंसर हे जिवो तमिलनाडु। हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू एक्टिंग चीफ ऑफ नासा आर आंसर हे जिवो भाबियालाल। When is World Cancer Day celebrated? Cancer Day हमर celebration होला 4th February रे। At which place has Asia's biggest air show started? Air show हमर start होला बेंगलुरु रे। Who is the first Union territory to become corona free? अंडमान निकोबार बर्तमान corona free हो जाइछि first Union territory। Recently the World Bank has announced to provide $500 million to which country? $500 million को बर्तमान देइछि बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक। रिसेंटली पास्ट अवे डस्टिन डायमंड वाज ए फेमस एक्टर। देन नेक्स्ट व्हेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च्ड एम्प्यूटी क्लिनिक हमर लॉन्च होइछि चंडीगढ़ रे। देन नेक्स्ट व्हिच कंट्री हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज डेमोक्रेसी इंडेक्स नॉर्वे होछि बर्तमान टॉप अछि डेमोक्रेसी इंडेक्स रे। Then next recently Ford has partnered with whom to launch cloud based data service answer हे जिवो Google। Then next who has been awarded the alert being icon award हमर पाइचंती AR रहमान। Then next question recently संगीत बहादुर has been appointed as the ambassador of India to which country our answer हे जिवो Malta। Then next question which ministry has launched the Asian India Hackathon 2021 hackathon बर्तमान करछि Ministry of Education। Then next question for the first time in how many years has the BCCI cancelled the Ranji Trophy event 87 years पर BCCI first cancel करछि एई वर्ष। Who has launched the Innovation Sandbox web portal Innovation Sandbox बर्तमान Bombay Stock Exchange।
Recently passed away Paul Curzon was a famous scientist. Our answer is famous scientist. Next question, which country has been out of the Colombo terminal project? Colombo terminal project ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ. Then next question, when is International Day of Human Fraternity celebrated? Human Fraternity most important ଅଛି 4th February. Our answer is 4th February. Next question, how long has the US and Russia extended the nuclear weapons control treaty? এটা ଆଉ 5 ବର୍ଷ extend କରିକି 2026 ଯାଏଁ ଦିଆଯାଇଛି. Then next question, where will a musical program called ଅଭିବାଦନ be held? ଅଭିବାଦନ musical program ଆମର ପୁନେରେ held କରାଯାଇଛି. Then which state government has recently announced no registration, no road tax on electric vehicles? our answer ହେଇଯିବ ତେଲେଙ୍ଗାନା. ମନେ ରଖିବା most important ଅଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା. Recently passed away Hal Holbrook was a famous, our answer ହେଇଯିବ actor. Then next question, where will the recent military exercise called ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ be held between India and America? our answer ହେଇଯିବ ରାଜସ୍ଥାନ. Then next question, who has been honored with the Zayed award recently? Zayed award ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଛି ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ତା ସହିତ ଲତିଫା ଇବେନ୍ ଜିୟାତିନ୍, এই ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ both of the above. Then next question, recently Vikram Singh Bedi has been appointed as MD of which company? Vikram Singh Bedi ବର୍ତ୍ତମାନ Google Cloud ର ଆମର appoint କରାଯାଇଛନ୍ତି MD. who has become the president of Boxing Federation of India? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜୟ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ. ନେକ୍ସଟ, which country has recently approved Russian corona virus vaccine Sputnik V? our answer ହେଇଯିବ ମେକ୍ସିକୋ. Then next question, according to the recently released report, who has become the top celebrity endorser of India? our answer ହେଇଯିବ ବିରାଟ କୋହଲି. Then next question, recently Andy Jassy has been announced as the CEO of which company? Andy Jassy ବର୍ତ୍ତମାନ Amazon ରେ ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ହେବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ. Amazon ହବ answer. Where has the teen health program named Udan Tara started recently? Udan Tara ବର୍ତ୍ତମାନ started ହେଇଛି ଧौलପୁର. Then ଚାଲନ୍ତୁ next question, who has inaugurated the ଚୌରୀ ଚୌରା ଶତାବ୍ଦୀ festival? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ inaugurate କରିଛନ୍ତି PM ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି. Then next question, who has been appointed as the interim head of CBI? CBI ର ବର୍ତ୍ତମାନ head ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ ସିହ୍ନା. ମନେ ରଖିବା ପ୍ରବୀଣ ସିହ୍ନା. Then next question, which is the first state to complete 5 lakh vaccination? First state ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ. ମନେ ରଖିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ. Next question, how long has the government recently set a target of 100% electrification of the broad gauge routes? এটা answer ହେଇଯାଉଛି 2023. Then next question, recently Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated Aero India at which Air Force station? our answer ହେଇଯିବ ଏଲାଙ୍କା. Then next question, which state government has recently launched a rehabilitation scheme for beggars? our answer ହେଇଯିବ ରାଜସ୍ଥାନ. beggars ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି. recently India's first amputee clinic, এটা ଆମେ discussion କରିଛେ, repeat ହେଇଯାଇଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼. Then next question, which state government has announced provide money to government school student for books? books ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହବ ଆର answer. ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁକ୍ ପାଇଁ. who become India's youngest female pilot? ଆଏସ୍ ଆଜିଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି female pilot. ଆଏସ୍ ଆଜିଜ୍. which state government has recently announced to web farm loans of 16.43 lakh farmers? our answer ହେଇଯିବ ତାମିଲନାଡୁ. Then next question, who has written a book titled Yes Man, the untold story of Rana Kapoor? ପ୍ରବୀଣ ସିଲାଲ ହେଉଛି our answer. ପ୍ରବୀଣ ସିଲାଲ, untold story of Rana Kapoor. which country has celebrated its 73rd Independence Day on 4th February? our answer ହେବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା. Then next question, where is the world's tallest swing ride by Bollywood Skyflyer opened? ବର୍ତ୍ତମାନ our answer ହେଇଯିବ ଦୁବାଇ. Then next question, which state has announced the opening of its first human milk bank? first human milk bank ଆମର open ହେଇଛି କେରଳରେ. Then next question, which company has received the first carbon neutral oil? our answer ହେଇଯିବ Reliance, first carbon neutral oil. who has started the Switch Delhi campaign recently? Arvind Kejriwal
कि दिल्ली मुख्यमंत्री अच्छा सी कैंपेन कर हु हाज रिसेंटली बिकम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल नेशनल सेफ्टी काउंसिल एसएन सुब्रमण्यम होती आर चेयरमैन देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द फास्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट आर आंसर हो हिमाचल प्रदेश आम ई कैबिनेट को लॉन्च कर व्हिच कंट्रीज गवर्नमेंट हाज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड्स फास्ट एनर्जी आइलैंड आमर आंसर हो डेनमार्क देन नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली विथ व्हिच कंट्री इंडिया हाज टाइड अप फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रे आवर आंसर हो बहरीन then next question which is the fastest country in the world to complete 40 lakh एटा टिके मिस्टेक हो जाइए 40 लाख हम 40 लाख वैक्सीनेशन इन 18 डेज आर आंसर हो आम देश भारत देन रिसेंटली पास्ट हुए द्विजेंद्र नारायण झा वाज ए फेमस हिस्टोरियन देन नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हाज चा बगीचा धन पुरस्कार मेला ऑर्गेनाइज आर आंसर हम आसाम देन नेक्स्ट क्वेश्चन हु हाज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट आर आंसर हो अशोक डिंडा देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री हाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर ए गजनवी मिसाइल विथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आर आंसर हो पाकिस्तान then next question which company has recently announced the closure of domestic payment services in India from April 1 बर्तन आर आंसर हो पेपल then next question which ministry has been organizing उद्योग मंथन कॉमर्स मिनिस्ट्री तब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली आरबीआई हैज एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट टू बी व्हाट परसेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 आर आंसर हम 10.5%. नेक्स्ट व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स आर आंसर हो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड ए स्पेशल सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रेन आर आंसर हो फेडरल बैंक हम आंसर who has recently been appointed as director at Air Force headquarter आम director होचंदी GS बेदी next question recently India has approved the sending of 1 lakh COVID-19 vaccine to which country आर आंसर हो कंबोडिया को बर्तमान इंडिया प्रोवाइड करछि where will India's first thunderstorm research center set up आर आंसर हो ओडिशा then next where was the first heliport of Assam inaugurated our answer हो Majuli हो our answer the next question which state has recently announced the setting of the Indian Institute of Skills in collaboration with the Tata Group सहित बर्तमान ओडिशा हो our answer which edition of Kolkata International Book Fair will be held recently 45th हो answer recently passed away Christopher Plummer was a famous actor which state government has approved मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा पुरस्कार आमर दिया जाउछि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा देन आगो को जिबा who has written a book called beautiful things हंटर बाइडेन लिखिसंती then next question which country has declared the nationalist group Proud Boys as a terrorist group our answer हो Canada then next question who has launched Assam Mala project launch करचंती Prime Minister Narendra Modi which district has topped the list of aspirational districts recently released by the Niti Aayog Shravasti our answer हो which country has approved China's Sinovac vaccine recently बर्तमान अप्रूव करछि इंडोनेशिया नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट इलेक्शन कमिशन हैज लॉन्च द ई वॉच मोबाइल ऐप आंध्र प्रदेश आर आंसर व्हिच स्टेट हैज लॉन्च 2 स्कीम्स नेमली प्रज्ञान भारती एंड भाषा गौरव आर आंसर हो आसाम संस्कृत भाषार विकास निमित्त लॉन्च कराई which country's former all-rounder Bruce Tyler has died recently our answer हो Australia then next question recently India has approved the sending of 1 lakh COVID-19 vaccine to which country our answer हो
कोविड-19 वैक्सीनेशन एटा ऑप्शन भूल अछि बर्तमान आम जो डिसाइड करथिले पछरे आर आंसर हे जो कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the first batsman to score a double century in his 100 test? जो रूट आर आंसर है जो जय रूट। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, who has been declared ICC as its global partner बर्तमान बाइजू को करिछि। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has launched the साइंस कैंपेन प्रथमे आरंभ होइतला हमरो ओडिसा रे, देन एबे मध्य प्रदेश रे मध्ये लॉन्च करा जाइछि। तबे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाखवार पावर प्रोजेक्ट ऑन व्हिच रिवर? आर आंसर हे जिवो जमुना नदी रे हमर लाखवार पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट होउछि। रिसेंटली पास्ट हुए अख्तर अली आज ए फेमस टेनिस प्लेयर थिले वर्तमान टेनिस प्लेयर। Who has been appointed as the new chairman of Broadcasting Content Complaints Council? बर्तमान आर आंसर होची गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been reappointed as the UN climate ambassador? माइकल ब्लूमबर्ग क्लाइमेट एम्बेसडर यूएन बर्तमान रीअपॉइंट करा जाइछि ब्लूमबर्ग को। Which state has announced यूनिकोड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड होल्डिंग? यूनिकोड बर्तमान दउछि उत्तर प्रदेश लैंड होल्डिंग पे। देन चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई इज गोइंग टू बिकम द 5th टाइगर रिजर्व ऑफ व्हिच स्टेट? आर आंसर हे जिवो तमिलनाडु रो। Where is the 16th joint military exercise युद्ध अभ्यास स्टार्टेड? युद्ध अभ्यास हमर स्टार्ट हेछि राजस्थान रो बीकानेर ठारे। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन, where will the world's largest wind power plant be set up recently? wind power plant बर्तमान रिसेंटली सेट अप कराइछि साउथ कोरिया। आर आंसर हे जिवो साउथ कोरिया। Then next question, where will the Mandu festival be held on February 13 and 14? Mandu festival हमरो होइछि मध्य प्रदेश ठारे। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट व्हिच स्टेट इज ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन? आर आंसर हे जिवो बिहार। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन, where has the foundation stone of the 100 feet high flag been laid? बर्तमान हाई फ्लैग बर्तमान आर आंसर हे जिवो गुलमर्ग आर आंसर होबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, where has the general थिमैया मेमोरियल म्यूजियम been inaugurated? आर आंसर हे जिवो कर्नाटक ठारे हमरो थिमैया मेमोरियल म्यूजियम इनागुरेट करा जाइछि। तबे आज पई मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जहाँ भी हमर रैपिड रिवीजन थिला एति थिला पाखापाखि 135 टा क्वेश्चन हमें रैपिडली रिवीजन कले। नेक्स्ट पार्ट रे बाकी गुडा को हमें डिस्कशन करी। तो समस्त को धन्यवाद। आउ कौन इम्प्रूव करा जाय परिबो वीडियो रे, आउ कौन डाटा दे परिबो आपण निजे तरफ कमेंट बॉक्स रे लिखंतु एवं केभळे लागिला आपण जणांतु। जानि सरला परे से अनुसार हमें आगु को बढ़िबा, आउरी बहुत डिफरेंट क्वेश्चन भी आनिबा। आ करंट अफेयर सहित निज को अपडेट रखिया पे हमें डेली क्लास रे जहाँ भी जति कि हमरो निया जाउची डेली करंट अफेयर्स ताकू बस स्टडी करवा। आ एटा बस रैपिड रिवीजन थिला, गोटे थर ऑलरेडी हमें डिटेल्स भाव में पढ़ी देछे, एबे केवल रिवीजन करा हैछे। तेणु रिवीजन टिको हमें परीक्षा टाइम रे बस ओवरलुक करके जीवा कथा। तेणु देखंतु निजर बहुमूल्य मतामत मध्ये दियंतु। धन्यवाद, थैंक यू।